Nestle Limited, company name is what beta? Nestle Limited belongs to the same risk class. Capitalization rate is what beta? Capitalization rate is 10%, that is KE. Capitalization rate is 10%, that is what beta? What? This is what KE. Now company has 1 lakh shares. Company has means company के पास पहले से 1 lakh shares है, मतलब beginning वाला. ठीक है. Company has 1 lakh shares selling at ₹100 each. Okay, no problem. The firm is contemplating a dividend of 6% per share. Firm is contemplating a dividend of 6% per share at the end of current year, which has just begun. Firm कितना dividend देने का सोच रहा है बेटा? 6%. 6% per share. 6% what? Per share. और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज. तो अगर डिविडेंड देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 100 into 6%. D is what? 6 रुपीज. डिविडेंड कितना हो जाएगा बेटा आपका? 6. ओके, वो करेंगे हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन MM model, based on which model beta? MM model, Modigliani Miller model. What will be the price of a share at the end of the year if dividend is not declared? If dividend is not declared, so what will be the market price? Means what will be the price of a share? Okay, first case. Secondly, what they said, what will be the price of a share if dividend is declared? If dividend is what beta? Declared, so at that time what will be the price of a share? Okay, that will also be considered, right? We'll do it. How to calculate it? Then third one is what? Assuming that the company pays dividend. Now in third case, what is given? If the company pays dividend, has net income of rupees 10 lakh. If the company, assuming that the company pays dividend, has net income means what? Earnings. It is also known as what beta? Earnings here, right? Net income of what? Net income of rupees 10 lakhs. Earning is 10 lakhs and makes, and what beta? And makes new investment of rupees 20 lakhs. And what? Makes new investment of rupees what beta? 20 lakhs. New investment of rupees 20 lakhs. So if it makes new investment, that is I is what beta? 20 lakhs. New investment of rupees 20 lakhs. During the period, new investment is what beta? 20 lakhs. So how many new shares should be issued? How many new shares should be issued? So how many new shares should be what beta? Issued, that we have to find out. Right? All three cases. Remember it. Clear? So first, what will be the price of the share at the end of the year if dividend is not declared? First, we have to find out that. Secondly, what will be the price of a share if dividend is declared? And lastly, what? Assuming that the company pays dividend, has net income, that is earning 10 lakhs and makes new investment of rupees 20 lakhs. If company makes new investment of rupees 20 lakhs, so for getting those investment of rupees 20 lakhs, right? How many new shares should be issued? बराबर है, जिसके लिए नेट इनकम भी आपको दिया है और फॉर्मूला मैंने बताया है क्या फॉर्मूला यूज करना है, राइट है. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप वी विल हैव टू सॉल्व इट. विल हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. चलो, तो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन सिट विद योर कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग. Now we will going to solve it. Chalo, step by step. So it's very simple. First, company name we have written here. Name of the company. What we have to find out? Calculation of price of a share under MM model. So how to calculate price of a share? The formula is what? P0 is equal to what beta? P1. P1 price means whatever price, market price of a share at the end of current year means at the end of year 1. P1 means at the end of year 1 plus dividend at the end of year 1 divided by 1 plus K. So this is the common formula which we have to remember it and you have to remember it. Okay.
ये तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखो. So this is the formula. Now, first what we have to do in first case, see, it is given in the question. See here. In first case is what? What will be the price of a share at the end of the year if dividend is not declared, right? So chalo. So first one. So first one, what beta? When dividend is not declared. Market price we have to find out when dividend is not declared. When dividend is not declared. So when dividend is not declared, so what will be the market price? Means what? Here D1 will be 0. Simple. It's simple. D1 will be what? Beta 0 because dividend is not declared. Na? Right? तो आ जाओ. So what will be the market price? Formula आपको पता ही है, अपने ऊपर लिखा है बेटा, बस वही यूज करना है आपने को. तो P0, अभी देखो फॉर्मूला क्या है आपका? P0 is equal to P1 plus D1 divided by 1 plus K. Now P0 is what? मार्केट प्राइस आपको पहले से दिया है, राइट है. P0 is what? देखो मार्केट प्राइस 100 दिया ना, ये देखो, सी हियर, ये दिख रहा है. द कंपनी हैज 1 लाख शेयर सेलिंग एट ₹100 each. दिस इज व्हाट P0 बेस है आपके पास मार्केट प्राइस का. ठीक है, सिर्फ आपको एट द एंड ऑफ ईयर 1 का मार्केट प्राइस पता नहीं है तो वो निकाल लेना है, राइट है. तो P0 तो पता ही है आपको. सो मीन्स फॉर्मूले में आपको P0 इज गिवन, दिस P0, ये दिख रहा है, ये P0 आपको पता है, नो अबाउट दिस. सो दिस इज व्हाट 100 is equal to P1 we have to find out. P1 we need to find out beta. P1 it is not given, plus D1 beta. D1 भी आएगा नहीं because dividend is not declared है. See, because dividend is what beta? Not declared, so D1 will not come. Divided by 1 plus KE. KE कितना है? KE 10%. Capitalization rate is what? 10%. So 10% can be written as what? 0.10. That is what? 0.10. ठीक है, तो चलो, तो ये क्या हो गया आपका? आ जाओ. So 100 is equal to same, ये तो P1 plus 0 divided by 1.1 or 1.10, whatever you want to write, you can write. Now, simple फंडा बेटा, क्या? 100 into 1.10. तो 100, ये 1.10, ये साइड ले लो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू P1 plus 0. P1 plus 0. चलो, तो 100 into 1.1 कितना आ गया? यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड. 110 is equal to P1 plus 0. तो फाइनली आंसर क्या हो गया? यस, P1 is equal to क्या हो गया? वही, ये तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो P1 आपका क्या हो गया? 110. So your P1 is what beta? 110. This is what your P1, right? So market price at the end of year 1 is what? 110. Clear? ये कभी होगा? When dividend is not declared. When dividend is not declared, your market price will be 110. That's it. Clear है बेटा? Next. Now the second one is what beta? When dividend is declared. Second, what they ask? What will be the market price when dividend is what beta? Declared. So secondly, देखो first अपना हो गया when dividend is not declared. Now the second one is what? When dividend is
what? When dividend is declared. Dividend is declared. Right? When dividend is declared. Chalo. So when dividend is declared, same formula 100 तो सेम ही आ जाएगा इज इक्वल टू P1 अपने को फाइंड आउट करना है बेटा. We have to find out the P1 प्लस अब D1 देखो कितना हो गया. D1 कितना आ जाएगा आपका. D1 तो नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो. D1 मींस व्हाट. डिविडेंड कितना है. डिविडेंड पर शेयर के बेसिस पे कितना है बेटा. तो कितना आएगा वो 6 रुपीज. अब ये कैसे आया 6. इधर ब्रैकेट में शो कर दूं मैं. ठीक है 6 कैसे आ गया. ₹100 पर शेयर था. 100 पर शेयर इंटू 6%. क्या बेटा 6% पर शेयर दिया ना क्वेश्चन में. 6% पर शेयर. सो 100 इंटू 6% कितना हो गया बेटा 6 रुपीज. दैट्स इट. 100 इंटू 6% पर शेयर दैट इज 6 रुपीज. आ गया P1 प्लस D1. राइट. सो डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस what k is what 0.10. yes very good beta. शाबाश. आंसर भी आ गया. वेरी गुड बेटा. नाउ तो 100 दिखा देता हूं मैं इधर. 100 is equal to P1. 100 is equal to what बेटा P1 प्लस 6 डिवाइड बाय 1.10 या 1.1 भी लिख सकते हो. ठीक है. चलो वेल डन शांतन. वेरी गुड. श्रेया, नीरज, प्राची वेरी गुड. यस करेक्ट आंसर है. तो चलो सो 100 इंटू 1.10 इज इक्वल टू P1 प्लस 6. तो 100 इंटू 1.10 कितना हो गया बेटा 110 इज इक्वल टू P1 plus 6. Now वेरिएबल एक साइड में लो. राइट. सो 110 ये प्लस 6 है. विल कम दिस साइड तो माइनस 6 हो जाएगा. इज इक्वल टू P1. ठीक है. सो कितना हो गया 110 माइनस 6 कितना हो गया 104. So this is what P1. So 104 is what beta your P1. That's it. हो गया. So this is what when dividend is declared. When dividend is declared, your market price will be what 104. When dividend is declared, your market price is what beta 104. That's it. Simple. Okay. Clear. याद रखना. So when dividend is declared, your market price will be 104. And when dividend is not declared, your market price will be 110. Clear बच्चा. तो ये सब माइंड में सबके फिक्स होना चाहिए. Clear. So when dividend is not declared, then market price is what beta 110. And when dividend is declared, at that time your market price is 104. That's it. Okay. Now third case, what is given? Third case in question they have asked about. क्या बोल रहे हैं लिख लेते पहले इधर. We have to calculate what number of shares to be issued. Calculation of what? Calculation of number of shares to be issued. Calculation of what? Number of shares to be issued. बराबर है क्या बेटा. Calculation of what? Number of shares to be issued. और ये देखो आपको दिया है पूरा इधर. See the data. Calculation of number of shares to be issued. देखो assuming that the company pays dividend as net income of ₹10 lakh and makes new investment of 20 lakhs. Right? During the period, how many new shares should be issued?
So number of shares to be issued कितना होगा if company make a investment of rupees 20 lakhs. Number of shares to be issued if when company makes an investment of rupees 20 lakhs. Okay. So beta, number of shares to be issued, formula I have given you. What is the formula? Put it here. So that is very simple. That is number of shares के लिए formula दिया ना. कितना number of shares होगा? What number of shares? Right है? तो ये डेल्टा मतलब चेंज होके नया शेयर्स कितना रहेगा, न्यू शेयर्स कितना अपने को इशू करना पड़ेगा. That is why. So change in n, number of shares कितना होगा is equal to, what is the formula? I, that is investment, minus फिर earning E minus ND1. फॉर्मूला याद रखना, E minus N into D1, राइट है, डिवाइड बाय P1. So this is the formula that you all have to remember it. Normal case. ठीक है. अब इसमें भी वही फंडा कि when dividend is declared and when dividend is not declared, same फंडा. तो चलो, तो सबसे फर्स्ट इसमें सब केस आ जाएगा अपना. First we have to find out when, चलो कर लेते हैं, when dividend is declared. When dividend is what? Declared. When dividend is declared, so at that time what will be the what will be the number of shares to be issued for raising rupees 20 lakhs, for raising rupees 20 lakhs. और याद रखना आपके पास नेट इनकम भी है 10 lakhs का, you have net income also. ठीक है. So when dividend declared is, when dividend is declared, so what will be the number of shares to be issued? So let's use the formula. चलो. So first one, the normal and usual formula, we have to use this formula like that. So change in number of shares means number of shares अपने को find out करना है बेटा, वो तो common है, is equal to, ये तो अपने को find out ही करना है. ठीक है. Is equal to I. बेटा I is given, that is I is what? 20 lakhs. Investment required is I means investment required. So investment required is what बेटा? 20 lakhs. Investment required is what बच्चा? 20 lakhs minus what? E is given, that is 10 lakhs. Earning is what beta? Net income is what? 10 lakhs. That is also given. Minus N. N means number of shares at the beginning. सब फॉर्मूले में बताया बेटा. Now number of shares at the beginning is what? Number of shares at the beginning. Beginning में क्या है? दिया है ना 1 lakh. Right? So 1 lakh. So 1 lakh shares, इसको लिख देता हूं मैं. 1 lakh shares है into what? D1. बेटा D1 तो आपने निकाला ना पीछे, देखो D1. ये क्या है? ये सब आपका D1 ही है ना. This is what your D1. ये दिख रहा है 6. 6 क्या है आपका? D1 है. बराबर है. तो D1 आपको पता ही है 6 है. बस. तो D1 आपका कितना है बेटा? 6. राइट है. D1 आपका 6 पर शेयर है. राइट. सो दिस इज व्हाट योर D1. D1 आपने पीछे भी निकाला है बेटा. D1 आपका कितना है? D1 is what? 6 per share. That is what you have calculated earlier also. ये दिख रहा है, ये D1 ही आपका. This is what? ये आपका D1 है बेटा. D1. राइट है. डिविडेंड पर शेयर. तो डिविडेंड पर शेयर मतलब शेयर का वैल्यू कितना है? 100. 100 का 6%. 6% पर शेयर है.
तो 100 का 6% दैट इज 6 पर शेयर आ गया, वही हमने दिखा इधर 6 पर शेयर, दैट्स इट, बराबर है 6 पर शेयर। चलो सो डिवाइडेड बाय व्हाट, नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, सिंपल फंडा, डिवाइड बाय व्हाट, P1 कितना है, P1 देखो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड में P1 कितना है आपका, ये देखो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, सो एट दैट टाइम योर P1 इज 104, when dividend is declared at that time your P1 is what, 104, तो आ जाओ, so P1 is what, 104, that's it। चलो अभी आ जाओ कैलकुलेट करो, 20 lakhs माइनस 10 lakhs, ये 10 lakhs तो आई, इधर 1 lakh into 6 that is 6 lakh, राइट है, करेक्ट है। इधर चाहिए तो आप बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट भी करना है जिसको तो कर सकता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, डिवाइड बाय 104, राइट। चलो सो 20 lakhs तो है ही बेटा, 20 lakhs कॉमन, माइनस 10 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया, 4 लाख, डिवाइडेड बाय व्हाट, 104, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 104, ओके। नाउ 20 लाख माइनस 4 लाख इज व्हाट बेटा, सिंपल 16 lakhs, अच्छा, सो 16 lakhs डिवाइड बाय व्हाट बेटा, 104, 16 लाख डिवाइड बाय 104, चलो कितना आंसर आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो इशू करना पड़ेगा, 15,385, शाबाश श्रेया, वेरी गुड बेटा, 15,385, ओके ओके, यस धनश्री, वेरी गुड, हाँ तो 15,385 राउंड ऑफ करना, शेयर्स है ना, तो शेयर्स एक राउंड ऑफ फिगर में होना चाहिए, अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो राउंडेड ऑफ, तो ये हो गया शेयर्स, मींस वी हैव टू इशू 15,385 शेयर्स, राइट है, मालूम पड़ा, 385 शेयर्स, तो और ज्यादा राउंड ऑफ करेगा तो 390 380 वो सब नहीं करना है, याद रखो फिर, अभी के लिए 385 15,385 शेयर्स will be issued for raising what, for raising investment of 20 lakhs when your net income is 10 lakhs, मतलब जब आपका अर्निंग 10 lakhs रहेगा, तो सब आ गया ना, देखो फॉर्मूले में इधर कि आपको 20 lakhs का रेज करना है इन्वेस्टमेंट when your net income is what, 10 lakhs, बराबर है, और 10 लाख में से आप देखो 10 लाख में से आप आपका डिविडेंड भी गया ना बेटा, out of this 10 lakh your dividend is also there, so dividend paid is also there, so dividend paid that is 6 lakh has been deducted, right, so your net income now remaining is what, 4 lakh and 20 lakh investment required, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन है पूरा, that's it, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेटा when dividend is declared, this is what for when dividend is declared। now secondly we will going to do it what for when dividend is not declared, when dividend is what beta, when dividend is not declared, so what number of shares we have to issue, when dividend is not declared, right, when dividend is not declared, same formula, so this is what number of shares we want to find out is equal to investment is what beta, 20 lakhs, you know that investment is 20 lakhs minus what, so E earning is what beta, 10 lakhs, earning is what beta, 10 lakhs minus what, minus dividend, now D1 beta, see here everyone n into D1, अब बेटा अगर आप इधर n into D1 करेगा, n कितना है आपका, देखो n है आपका 1 लाख,
1 लाख शेयर्स है, इंटू D1 है आपका कितना, इधर D1 आएगा ही नहीं बिकॉज डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड है बेटा, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड मींस जीरो हो गया, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड मींस व्हाट, कुछ नहीं डिक्लेयर हुआ मतलब जीरो है, और जीरो है तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, दिस ऑल विल बी जीरो, समझा कि नहीं, तो ये चीज याद रखनी है। तो डिवाइडेड बाय what, now when dividend is not declared, what will be the, what, P1 कितना था आपका, देखो इधर, when dividend is not declared तो P1 कितना था, dividend is not declared कौन सा केस है, ये रहा, when dividend is not declared, so at that time your P1 is what, 110, your P1 is what, 110, तो आ जाओ, so P1 is what बेटा 110, okay, चलो, now 20 lakhs माइनस, अभी देखो 10 lakhs माइनस ये तो जीरो हो गया, दिखा देता हूं मैं, एक स्टेप दिखा दे रहा हूं इधर, 10 lakhs माइनस जीरो डिवाइड बाय 110, सो 20 lakhs माइनस ये तो 10 lakhs ही हो जाएगा बेटा, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 110, ओके, 20 lakhs माइनस 10 lakh डिवाइड बाय 110, ओके, तो कितना हो गया फाइनली, 10 lakhs divided by 110. So finally 90, okay, 91. 9091 shares will be issued. When dividend is not declared, at that time you will going to issue what, 9091 shares. When dividend is not declared and you required investment of 20 lakhs and net income is what, net income or earning is 10 lakhs. Right? In such case, you have to issue what, 9091 shares. So that's the end of the what, solution.